Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep, and I welcome each and everyone here for daily news analysis that we do from Monday to Friday at sharp 11:30 a.m. So in this session we discuss about all the important news from all major newspaper we will cover in this session. Majorly we cover from The Hindu and Indian Express, right? And my name is Ashish Bhargav. So let's start the class and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. This is what I pray for the God. And in daily news analysis, we discuss about international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, especially for the law entrance exam, and we discuss about the amendments and bill also. So here is the quote of the day. If your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. And to inculcate this thought process, what exactly you need to do to read the newspaper. Why reading newspaper is very important? Because of the reason we can say that reading newspaper makes you very aware about all the things that what is happening around you. And this is very important things because being a law-abiding citizen, you must know about what is happening in your country, right? And that's why in daily news analysis is very important to save your time to read the newspaper, because for the important articles we discuss in the newspaper analysis. And now here is the quote of the day. Second one, just one small positive thought in the morning can change your whole day. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night, just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And we have taken initiative, as we know, the questions of the day, and that is very important. So at the end of the session we discuss about 5 questions, which is very important because it gives you immense idea like what kind of questions that could be possible to ask with the help of current affairs session. Newspaper ko read karna to gather information to solving question, they are two different things, right? Now here is the very first news of editorial, the path of 2047. There are many things that is discussed in this article, but what is the crux? So we will not discuss about each and every exchange here, which is not relevant exactly. So first thing that we will discuss about the National Statistical Office, NSO. The full form is National Statistical Office release the data of GDP. So as we know that earlier it was CSSO and NSSO that has to be merged in 2019, that becomes NSO. So National Statistical Office in our country release the data of GDP, right? So National Statistical Office shows that GDP in constant price of financial year 23 was 8.6%, which is higher than pre-COVID year of financial year 2020. So in other words, we can say that like India had a growth rate of 2.86% per annum in the last 3 years. So there is economically slowdown, not in our country if you go to the geopolitical level. And the last month, the finance minister, which is Nirmala Sitharaman, mentioned that this financial year that budget would follow the spirit of earlier ones. And the minister also said that the next budget will be the set of template for the next 25 years. So what are, we can say, some of the good things in the earlier 2 budgets? First, they were transparent on fiscal deficit numbers by including the earlier of budget numbers. Second, they gave a push to the capital expenditure and infrastructure. And third, we can see the path towards its fiscal consolidation. And the next budget will be fully continue these 3 good measures. So basically, we can say that the first we have to think about the manufacturing sector is concerned. As we know that in our country, there are the 3 sectors of economy: primary, secondary and tertiary. Primary, secondary and tertiary. So primary sector is concerned, primary sector is basically an agriculture sector. Secondary sector, that we can say the manufacturing sector. And tertiary sector, we can say that is known to be a service sector. So we are lagging behind somewhere in the manufacturing sector. So in this budget that we will work on that. So regarding the template for the next 25 years,
and the government also has to focus on short-term and long-term factors. In the short-term, monetary and fiscal policies may have to support growth and take care of global headwinds so that these policies would not lead to disruption of growth. So India today, as we can say, the fifth largest economy. It is likely to overtake Germany and Japan and become the third largest economy in a decade. So we can say that we have fifth largest economy in the world. So however, India की जो ranks आई थी, that is 142 out of 197 countries on per capita income में इंडिया की rank कितनी थी? 142 out of 197 countries. So जो RBI के गवर्नर है, which is C. Rangarajan, which is mentioned that India has no choice but to grow fast given the present level of per capita income, and the role of states is equally or more important in raising growth and jobs. So this is majorly about, we can say that, the crux of the article. And why the path up to 2047? Because of the reason that India has to address the long-term structural problem if it wants to be a developed country by 2047. So while there has been, recovery from the pandemic, and they still remain concerned for medium to long-term growth, and government have taken many initiatives for the boosting of MSME sector as well, and for the gig economy also, which we have discussed in the newspaper analysis many times. Next one, talking about India has sought modification of 62 years old treaty that governs the sharing of waters of Indus system. So Indus river system that has to be divided into Eastern river and Western river. So Eastern river, that we can say that Satluj, Beas and Ravi, and Western rivers we can say that Indus, Jhelum and Chenab. So India has issued a notice to Islamabad seeking modification of more than 6 decade old Indus Water Treaty that governs the sharing of water of 6 rivers in the Indus system between the two countries. So it says that we have many hydroelectric projects, and the notice appears to be fallout of the long side disputes over the 2 hydroelectric power projects that India is building. One is Kishanganga river, which is the Kishanganga kiski tributary hai? That is a tributary of Jhelum. It's a tributary of Jhelum. So one is Kishanganga project, and second we can say that on the other side of the Chenab. So August 2016 में क्या हुआ था? Why I am telling you the background story, which is very important to know what is the present scenario, what exactly is the bone of contention between the two nations. So August 2016 में पाकिस्तान ने अप्रोच किया था वर्ल्ड बैंक को, which had brokered the 1960 treaty, seeking the constitution of a court of arbitration under the relevant disputes redressal provision India. So India ने फिर move किया separate application asking appointment of a neutral expert, which is lower level of dispute resolution provided in the treaty. बाद में फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, थर्ड पार्टी को अनाउंस किया to the treaty के लिए, acknowledge that arbiter of the disputes was meanwhile faced with a unique situation of having received 2 separate requests for the same disputes. बाद में इसका outcome क्या है? There were some areas of the water that was sharing to the India and that Pakistan. इसमें ईस्ट रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स में डिवाइड किया गया. सो जो ईस्टर्न रिवर्स थे सतलज, बियास एंड रावी. सो एनुअल फ्लो बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, इंडिया हैज़ अ फुल राइट्स ऑन ऑल वाटर्स, और पाकिस्तान कैन ऑल्सो यूज वट एवर फ्लोज इन टू इट्स टेरिटरी. जबकि वेस्टर्न रिवर्स में ये डिसीजन आया इंदस एंड झेलम एंड चेनाब कि एनुअल फ्लो बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान इंडिया कैन यूज 62.2 cubic kilometer water reserved to Pakistan. So बाद में क्या issues हुए? So Pakistan is under no obligation to agree to India proposal. As of now, it is clear what happens if Pakistan does not respond to India's notice within 90 days. So India has not fully utilized its rights over the water of 3 east flowing rivers, okay, Ravi, Bias and Satluj, over which it is full control under the treaty. And it has also utilized the limited rights over the 3 western rivers, which is Indus, Chenab and Jhelum, which is meant of Pakistan. जो Indus, Jhelum and Chenab है, which is for the Pakistan, and eastern river goes to the India. So until unless अभी तक इसमें कोई भी outcomes नहीं आई.
only the issue is going on. Here is the third one, India's groundwater governance is in better shape. सो इस आर्टिकल में क्या चीज़ें आपको अच्छे से देखनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, इसमें यूएन की क्या रिपोर्ट है, ठीक है, और इसके बाद इसमें जो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव. सो एज पर द डेटा शो दैट कि नियरली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया एंड कंज्यूम्स 4% ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर्स. India is largest groundwater users. So a rapidly growing economy and population are straining the country's groundwater resources. So groundwater क्या है, एक बैकबोन है इंडिया के एग्रीकल्चर का एंड ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. बिकॉज मोस्ट ऑफ द irrigation has to be done by in our country is with the help of groundwater. So we can say that nearly 80% of the country is drinking water and 2/3 of irrigation needs. So groundwater is pivotal to India's water security. And the fact that the theme of UN World Water Day, what is the theme of UN World Water Day, is we can say making the invisible visible, which is we can say making the invisible to visible. And central government, we can say that, is working to achieve the goal of sustainable groundwater management in collaboration with the state and UT. So इस process में the important deliverables have been identified that include a reduction in groundwater extraction to below 70%, increasing the network of groundwater observation wells, installing digital water level and recorders for real-time monitoring. बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज थे, जिसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में मर्ज कर दिया गया. सो दिस गिव्स द इम्पेटस टू द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद वी कैन से स्पेशल फोकस ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट. एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वॉज लॉन्च सब्सिक्वेंटली टू ट्रांसफॉर्म जन शक्ति इंटू जल शक्ति. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड जन शक्ति, जन विच मीन्स पीपल, like support of people. So Jan Shakti into the Jal Shakti. Now a scientific approach अगर आप बाद में देखें इसमें, तो अटल भूजल योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट, दैट इज गोल इज पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. इन दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया. एंड द रिजल्ट इज दैट एज वी नो दैट some of this success may be attributed to implementation of comprehensive groundwater guidelines, which in 2020 for regulation in various sectors and making the process of issuing a non-objection certificate transparent and time bonding using a web-based application. क्या हमें सोर्स है? As we know that as one of the fastest growing economies, India will need adequate groundwater resources to manage anthropogenic pressure, मतलब हमें drinking water के लिए and for the irrigation of land. And it is important to ensure source sustainability to provide safe drinking water to all rural households in 2024 under the Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. So Jal Jeevan Mission में the things has been clear. So by the 2024 we will reach to the safer drinking water to all rural household by 2024. And the communities will have to manage their groundwater resources better with the help of various government agencies and non-governmental organization, which is known to be a NGO. Now moving to the next article, here is 5G will create a new urban area. So basically, as we know that like recently many of us woke up to messages from our network providers declaring that our cities and SIM are 5G enabled. So that will, we can create a new urban India. And because as we know that like IoT, automation, virtual reality, Web3 to comprehend the extent of which 5G can change our world. Even with this, it argued that we barely scratch the surface of 5G true transformation potential. There are many pros and cons, but we can say that it will change our entire system of our country.
So it will be thus the useful to have urban planners and policymakers consider the impact of 5G proliferation on urbanization, while the former is still taking shape of so that India can see well planned, efficient, sustainable and resilient urban system in the future. Now, this week is very important news. Science Earth core spinning slower than the surface. Nest of rare dinosaurs found in Narmada Valley and more. This is the Hindu की न्यूज़ थी ये. इसमें आपको क्या समझना है कि हाउ द अर्थ कोर वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, वट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन दैट. ये देखो एनाटॉमी ऑफ द अर्थ. यू विल क्लियरली सी द इनर कोर, मैंटल एंड क्रस्ट. सी ये हमारा इनर कोर है विच इज मेड ऑफ मेनली ऑफ आयरन एंड निकल ऑल्सो. एंड हियर इज ये हमारा कोर का पार्ट है. एंड हियर इज मेंटल एंड हियर इज क्रस्ट. सो अगर ये रोटेट स्लो होना स्टार्ट होगा द व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन दैट. ये फिर से देखते हैं. ये क्रस्ट, हियर इज मेंटल, हियर इज आउटर कोर एंड हियर इज द इनर कोर. नाउ इनर कोर की बात करें तो न्यू रिसर्च ने सजेस्ट किया कि अर्थ की इनर कोर जो है दैट हैज स्टॉप्ड स्पाइनिंग फास्टर देन इट्स सरफेस एंड माइट नाउ बी रोटेटिंग स्लोअर देन इट. So inner core started rotating slightly faster than the rest of the planet in early 1970, but it had been slowing down before coming in sync and Earth rotation around 2009. So इसमें एक negative trend है, meaning the inner core is now rotating slower than the surface, and next change may be occurring mid 2040. इसका impact 2040 में देखने को मिलेगा, and the result seems to indicate that Earth's inner core changes its speed of rotation every 60 to 70 years on average. How the earth inner core is formed. So earth के जो innermost layers of the earth, it is a hot iron ball of the size of Pluto. So inner core is made of the iron and the inner core is solid due to the pressure caused by the weight put on it and earth other top layers. Obvious सी बात है, इसमें इतना solid होने का रीज़न क्या है कि उसके ऊपर और 3 layers होते हैं, which is crust, mantle and core and outer core and inner core. So roughly 5,000 kilometers below the surface we live on. The inner core spin independently because it floats on the liquid metal जो है outer core के ऊपर. रेडियस की अगर बात करें तो इसका inner core की जो रेडियस है which is average radius of 1,220 kilometers, and the boundary between the inner and outer core is located is at approximately 5,050 kilometers below the surface of the earth, and this boundary we can say that Lehman seismic discontinuity. टेम्परेचर की बात करें इसमें तो 7,200 से 8,500 फ़ारेनहाइट. 3 लेयर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. क्रस्ट जो कि आउटर साइड लेयर ऑफ द अर्थ है विच इज़ मेड ऑफ सॉलिड रॉक मोस्टली बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट की बनी होती है. मेंटल की बात करें तो इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड अप टू 2,900 किलोमीटर थिक. इट कंसिस्ट ऑफ हॉट डेंस आयरन एंड मैग्नीशियम रिच सॉलिड रॉक. एंड इफ यू टॉक अबाउट कोर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, द लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर. And outer core is made of nickel, iron and molten rock. So इसमें आप देख सकते हैं, we will clearly see in this one. This one is the inner core, and that inner core is made of mainly of iron. I hope this one is clear for everyone. Now here you see winds erode Sundarban's temple. Where is Sundarban's? West Bengal. So an ancient terracotta temple in West Bengal, Sundarban's, which has survived the ravage of 9 time of millennia, is now facing a very modern threat. Threat क्या है कि यहाँ पे outer wall of Jatardhual. Jatardhual क्या है? एक 11th century का शिवा temple है, which is located at Raigaram South 24 Parganas. इसके बारे में हमें क्या चीज़ें समझनी है कि इस टेम्पल के बारे में. Jatardhual does not follow the traditional structure of Bengal temple. The architectural style is more likely to Oriya style of towering, जिसे हम कलिंगा आर्किटेक्चर कहते हैं. कलिंगा is somewhere is the place in the Odisha. So the temple was abandoned for a long time, but the locals believe that temple is about to Jatadhari Shiva, hence the name of Jatardhal. So
जातरदोल को मेंटेन करती है बाय ASI, which is Archaeological Survey of India, and there has been more excavation that reveals Jagmohana and Garbhagriha, which is inner sanctorum in the style of Odia temples. So अगर हम आप बात करें इसमें, यहाँ पे every year second day of Baisakhi, usually mid of April, horse race takes place at here, and the horse race starts from the temple and after following a standard route at the temple. अगर बात करें यहाँ पे कलिंगा आर्किटेक्चर की, ये इसका यहाँ पे रेखा दुआ होता है अब श्राइन, गर्भगृह वेयर द मेन टेम्पल एंट्रेंस के पास यहाँ पे, एंड हियर इज पिधा दुआ विच इज वी कैन से कम्युनिटीज हॉल्स यहाँ पे होती है, एंड खारका दिवस. तो दैट मीन्स जैसे आर्किटेक्चर आपने द्रविडियन स्टाइल्स की टेम्पल्स देखी होंगी, द्रविडियन स्टाइल की टेम्पल्स आपकी साउदर्न इंडिया साइड देखेंगी, विच इज़ मेनली बिल्ट बाय द चोला एंड चेरा डायनास्टी. तो साउदर्न इंडिया वी हैव मेनली टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज मुगल गार्डन्स इज नाउ अमृत उद्यान. तो राष्ट्रपति भवन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज मुगल गार्डन्स, उसको अभी एंड ऑन द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, सो अब इसका नाम चेंज कर दिया गया कि द राष्ट्रपति भवन गार्डन्स एज अमृत उद्यान. और यहाँ पे एंड गार्डन इज थ्रोन ओपन टू पब्लिक फॉर अ लिमिटेड पीरियड ड्यूरिंग स्प्रिंग ईच ईयर and will remain open in the March 26th. So इस मंथ के एंड से might be tomorrow and day after tomorrow से इसे ओपन करेंगे, और ये March 31st तक, January 31st को ओपन किया जाएगा एंड March 26 तक ये ओपन होती है. सो नाउ ओनली नीड टू रिमेंबर दैट मुगल गार्डन्स का नाम जो है वो अमृत उद्यान करा हुआ है. एंड नेक्स्ट वन, 90 फॉसिल्स नेस्ट बिलोंग टू इंडिया लार्जेस्ट डायनासोर्स अनकवर. रिसर्चर्स ने अभी ये फाइंड आउट किया कि लाइक वी कैन से लाइक अनकवर 92 नेस्टलिंग साइट्स, और इंडिया में तो ऐसे भी एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर्स. उसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे उसको नाम रखा टूनोसॉर्स. सो टाइटानोसॉर्स वर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लॉन्ग नेक प्लांट ईटिंग डायनासोर्स दैट वॉक ऑफ 4 पिलर्स लाइक एग्स. और ये जो है पार्ट ऑफ लाइज डायनासोर ग्रुप्स के हैं, डायनासोर्स कॉल सॉपोड्स, विच इंक्लूड्स अदर डायनासोर्स with similar body design and Brontosaurus and Diplodocus that lived in the Northern America during the Jurassic period. और बात करें यहाँ पे Titanosaurus, which were in the last surviving group of long-necked sauropods, and the grouping includes some of the largest land animal ever known to have existed on the earth, such as Patagotitan. So Titanosaurus are only known about the less than 120 million years ago in पैटागोनिया sauropods. अगर हम इसके टाइम पीरियड्स की देखें यहाँ पे, सो दे हैव वेरी लॉन्ग नेक्ड स्मॉल हेड्स, एंड जो sauropods है विच इज़ इन मेघालय, मेक द 5th स्टेट आफ्टर गुजरात. पहले गुजरात में है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, एंड मेघालय इज़ द ओनली स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू रिपोर्ट sauropods के बोन्स वहाँ पे मिले. सो मेक श्योर इज़ द ओनली स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. द फर्स्ट डायनासोर बोन वर डिस्कवर्ड इन द बाड़ा शिमला हिल इन जबलपुर कॉन्टिनेंट. जबलपुर इज इन मध्य प्रदेश. So as we can see the timeline is here, Cenozoic and Mesozoic and Paleozoic. इन टाइम में इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए, लाइफ फॉर्म्स, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स और बर्ड्स, मॉडर्न ह्यूमंस, फिर उसमें स्प्रेड हुआ, फिर ग्रासी इकोसिस्टम बने, फिर अर्ली प्रीमेट्स, फिर मास एक्सटिंक्शन की बात करें प्लासेंटल मैमल्स आए. उसके बाद मास एक्सटिंक्शन में फर्स्ट डायनासोर्स को यहाँ फाइंड किया गया ट्रासिक एज में. इस एज में ये हमें कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कार्बन रेडियो डेटिंग सिस्टम के थ्रू हमें ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है. कार्बन रेडियो डेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल कि वो कोई भी चीज़ कितनी पुरानी हो, लाइक कोल फॉर्मिंग स्वैम्स, शार्क एबुडेंट, फर्स्ट रेप्टाइल्स मिले यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड मिसिसिपियन एज में. ये सब ज्योग्राफी में आपने स्टडी करी हुई होंगी. मार्क्स एक्सटेंशन की बात करें, फर्स्ट एम्फीबियंस मिले यहाँ पे इन द डेवोरियन एज में. एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म ये हमें मिलना शुरू हो गए पैसेम्ब्रियन एज में, विच इज़ द प्रोटोजोइक का एक पीरियड है. बेसिकली इस पीरियड को हमने डिफाइन करा हुआ है एज अ जोग्राफिकल पीरियड. हमें जिस हिसाब से रॉक्स मिले उसको हमने उस हिसाब से डिफाइन की हुई है इसमें चीज़ें. नाउ ब्रेस्ट कैंसर, मोर इंसाइट्स ऑन हाउ हार्मोनल थेरेपी वर्क्स. सो अभी यहाँ पे जो ACTRAC विच इज़ एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जो कहाँ पे मुंबई में है,
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक डेटा रिलीज की, इसमें ये चीज़ें बताई गई कि यहाँ पे हमारे इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर फॉर द फीमेल्स इन इंडिया, एंड नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेज इन इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 13% बाय 2025। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेटा की, तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 में ये चीज़ें मेंशन की गई। एंड ब्रेस्ट इंसिडेंस, कैंसर इंसिडेंस इज हाईएस्ट इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, अदर मेट्रोज एंड बिग सिटीज़। सो NCRP जो है हमारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, वो हमें रिकमेंड्स करता है रेगुलर स्क्रीनिंग, मेंटेनिंग ऑप्टिमल बॉडी वेट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू minimize risk and consultation with the doctor in case of family history. So one of the main mechanism to resistance to hormone therapy is the presence of mutation in the hormone receptors themselves on through the down regulation of expression levels. So ये hormone therapy is using it with the help of, we can say, यहाँ पे जो थेरेपी प्रोसेस है हार्मोन थेरेपी, दैट इज टारगेट्स हार्मोन रिसेप्टर्स को टारगेट करता है इन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स टू शो द स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर्स, एंड इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑफन यूज टू, वी कैन से, कॉम्बिनेशन विद अदर ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी, रेडिएशंस और कीमोथेरेपी। जो रेसिस्टेंस है हार्मोनल थेरेपी की इस ब्रेस्ट कैंसर इज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन ट्रीटिंग हार्मोनल रिसेप्टर्स पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज ऑल अबाउट द crux of the article. Why is Supreme Court examine marriage law for minors? क्यों ऐसा? Because यहाँ पे भी recently Supreme Court ने क्या mention करी? So earlier this month the Supreme Court announced that it would examine whether minor girls as an age of young of 15 years can marry to on the basis of custom or personal law. हमें पता है कि हमारे कंट्री में, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1954 क्लियरली सेज कि यहाँ पे शादी के लिए एज आपकी 21 होनी चाहिए, पर एज पर द शरियात मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या है कि वंस द गर्ल्स रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी कैन गेट मैरी। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशंस है इस लॉ का। दैट्स वाई गवर्नमेंट वांट्स कि UCC को फॉलो करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, एज पर द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एज पर द मुस्लिम लॉ, अ गर्ल attain puberty or the age of 15 years and above could be married on the basis of Muslim personal law, irrespective of provision of protection of children from the sexual offences, POCSO Act. POCSO Act में भी ये चीज़ें मेंशन की गई है। तो NCPCR ये आर्ग्यू करता है कि the girls as young as 14 and 15 are being married off a plea of personal law and custom cannot be used when the POCSO Act and Indian Penal Code make such marriage an offence. सो प्रोहिबिशन क्या देता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 में जो बिल आई थी उसमें अमेंड किया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम द 18 to 21। सो 18 to 21 जो शादी की एज की गई किस मैरिज एक्ट में, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को हमने अमेंड किया। सो इट वॉज रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर फर्दर डेलिब्रेशन एंड इट हैज़, we can say, already got 3 extension to submit the report, और लास्ट में इसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2022 में सबमिट की गई। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी होगी कि पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पॉक्सो, वी कैन से, द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है इंडिया में विच इज डीलिंग स्पेसिफिकली विद द सेक्सुअल अब्यूज फॉर चिल्ड्रन, इनेक्टेड इन 2012 एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द एक्ट वॉज डिजाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज लेस देन 18 फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी ऑफेंसेज एंड प्रोवाइड्स फॉर establishment of special courts of trial for such offences and related matters and incident। कुछ अगर इसमें salient features की बात करें तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉ है इसमें। तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एस्टैब्लिश टू जेंडर न्यूट्रल टोन ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। इसमें एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, कोई भी टाइम लिमिट नहीं फिक्स की गई फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। अ विक्टिम कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन अ नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर द अब्यूज हैज़ बिन कमिटेड। मैंडेटरी रिपोर्टिंग की गई है। द एक्ट ऑल्सो मेक्स इट लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन अवेयर ऑफ अ offense to report of sexual abuse, and in case
he or she fails to do so, the person can be punished with 6 months imprisonment or a fine. इसमें इश्यूज़ क्या है? तो इसमें एनसीपीसी या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मार्च 2007 में अंडर द कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हैं आर इन द कॉन्सोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स perspective which is enshrined in the constitution. Fire on wheels. So यहाँ पे Leopard 2 tank को बताया गया. Germany has not decided whether to allow its Leopard 2 tanks to send to Ukraine, which can be used against Russia during the ongoing war between two countries. ये एक जर्मन मेड बैटल टैंक है, डेवलप करता जर्मन वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग Trashworth Wegman, और Leopards were the first produced in the late 1990s for the West German army in response of Soviet threats during the Cold War. तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन ही याद रखनी कि Leopard 2 जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग बैटल टैंक्स यूज्ड बाय जर्मन आर्मी फॉर डिकेड्स एंड बाय द militaries of more than a dozen other European nations, as well as the armies of countries as far apart as Canada and Indonesia. Now, EPFO plans to review high pension payout cases sparks concern. क्या है EPFO? Which is Employment Provident Fund Organization. So 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक इशू किया था नोटिफिकेशन जो अलाउ करता है EPFO मेंबर्स को and their employer to join avail to options of contributing 8.33% of actual salary to the employee pension scheme EPS without any ceiling, thus enabling the member to receive a higher pension. 6 मंथ का डेडलाइन दिया था, लेटर बाद में एक्सटेंड किया गया उसे. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि एम्प्लॉय हु हैड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर हायर पेंशन वुड गेट अ फर्दर 4 months फॉर द डेट ऑफ दिस कोर्ट. अगर मैं बात करें EPFO की, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया एंड इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ EPFO अगर बात करें तो जितने भी एक्ट होते हैं दैट ऑल इट्स स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्राईपार्टाइट बोर्ड, मतलब 3 बोर्ड है कॉल्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी. और द बोर्ड कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट जितने भी सेंट्रल और स्टेट के होते हैं, और ये बोर्ड चेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कवरेज की बात करें इसमें तो यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स होती हैं दैट इज ऑफर्ड बाय EPFO कवर इंडियन वर्कर्स एंड इंटरनेशनल वर्कर्स फ्रॉम कंट्रीज विद whom to EPFO हैज साइन bilateral agreement. India's first mission to study the sun begin by June-July. ISRO ने अभी is planning to launch the Aditya L1 mission by June-July this year. So Aditya L1 is the first Indian space mission to observe the sun and solar corona. Solar का outer layer जो होता है उसको हम कहते हैं. So ISRO chairman we can say that, अभी कौन है ISRO के चेयरमैन? एस सोमनाथ ने बताया कि जो आदित्य 1 है हमारे इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन है टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना. एंड आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय द ISRO टू बी L1 ऑर्बिट विच इज द फर्स्ट Lagrangian points of the sun earth system, and L1 orbit allows Aditya L1 to look at the sun continuously. So objective क्या है कि L1 will study the sun's corona which is visible and near infrared rays. सन्स का फोटोस्फेयर, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज होते हैं, क्रोमोस्फेयर जो कि अल्ट्रावायलेट होती हैं, सोलर इमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इंजेक्शंस, एंड विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन. चैलेंजेस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ ऑन एवरेज कंपेयर टू द 3.84 lakhs to the moon, and this huge distance poses a scientific challenge which is called Lagrange point 1. जापान टू फ्लश फुकुशिमा वेस्ट वाटर, और इनके भी कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि वेस्ट वाटर विच को उसको रेडियो एक्टिव मटीरियल से इसको एक्सक्लूड करते हैं ट्राइटियम से. ट्राइटियम वाटर विच इज केमिकली वी कैन से आइडेंटिफाई टू द नॉर्मल वाटर ट्राइटियम. फुकुशिमा का देखें तो जापान अडॉप्टेड न्यू पॉलिसी प्रमोटिंग ग्रेटर यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू इंश्योर ए स्टेबल पावर सप्लाई एंड ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेज. और एक मेजर रिवर्सल है फेज आउट का. ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 2011 में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ओकुमा जो कि कहाँ पे है? जापान में. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे, एंड हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन.
So in the structure of planet Earth, sorry. Below the mantle, the core is mainly made of which of the following? Aluminium, chromium, iron, silicon. Obviously, recently we have discussed about this in the beginning of the, once we are solving the questions, discussing the passage. So iron is the main, core is mainly made of iron. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे inner core which is solid nickel and iron, outer core is liquid and nickel and iron, and mantle जो होता है molten rock का होता है, crust is made of rock. So the earth is composed primarily of the rock and core is primarily composed of iron. Next one. Which of the following best describe the aim of Green India mission of the government of India? Option 1 कहता है incorporating environmental benefits and cost into the union and state budget, thereby implementing the green accounting. Second one, launching the second green revolution to enhance agricultural output so as to ensure food security to one of the all in the future. Third one, restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures. So the answer would be only third option is correct one. C is the right answer. The mission intends to increase forest tree cover, improve enhance ecosystem service, and to increase forest-based livelihood income, and about 3 million households. So the rest other statement are wrong. As we can see, the first statement is incorrect one, second is also, only third one was correct one. In recent years, which of the following are the largest lender in the education loan sector in India? Private banks, public sector banks, regional rural banks, and cooperative banks. So obvious, that is the largest lender is public sector banks. B is the right answer. So low value education loans up to 7.5 lakh constitute a bulk of defaulters in the education loan portfolio of banks. और obvious यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक के पास बहुत ज़्यादा होता है. एजुकेशन लोन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स obtained through a right to information act show that default rate is much lower for loans disbursed to students in premium institute as compared to those in secondary institutes. And public sector banks are the largest lender in education loan sector and have a market share of about 91%. If it are regional rural banks and private banks constitute the remaining 9% of the market. What is the process that occurs during nuclear fission? The process of combining two or more atoms to form a larger atom, the process of changing the energy level of an atom, the process of releasing energy from an atom, and the process of splitting an atom into two or more smaller atoms. This is quite very easy. You guys have a study somewhere about nuclear fission and fusion reaction. So it's a D is the right option. Nuclear fission is a process of splitting a heavy atom such as uranium or plutonium into two or more smaller atoms, releasing a large amount of energy in the process. And this energy can be harnessed to generate electricity in nuclear power plants. So fission process, that is split larger atom into two or more smaller ones, and fusion is join two or more lighter atoms into a larger one. This is the difference of fission and fusion. Consider the following statement as the last question about India Energy Week 2023. It is the first major event under India G20 presidency. It will be organized by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. So which of the statement given above is our correct one? One only, two only, both one and two, and neither one nor two.
Obvious the both of the statement is correct one. C is the right answer. So IEW, which is India Energy Week, is the first major event under India G20 presidency, and it will be organized by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. India Energy Week is the only all-encompassing international energy event supported at the highest level of Indian government, with participation from all public sector undertaking, which is PSU, and officially supported by the Federation of Indian Petroleum Industry, which is FIPI. So this is all about the session, student, and I hope you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section, and please share this video to your friends and family group. Why I'm telling you the family group also, because being a citizen of India, everyone must need to aware about what is happening around you, right? So we'll meet you tomorrow at the same time at 11:30 a.m. Stay tuned. If you have any questions, please let me know in the comment section. Our entire team is helping you each and every time, right? And if you are new in this channel, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all the Pratham Test Prep mentors. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care.